Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In our previous lecture, I told you that to find the solution of system of linear equations in two variables, we have four methods. I already told you that first one is geometrical method, that is also known as graphical method. Second one is elimination method. Third one is substitution method, and the last one is cross multiplication method. In our first lecture, I told you about how elimination method can be used to find the solution of system of linear equations in two variables. Now today we will discuss about substitution method. I already told you that whenever it is an examination point of view, if an examiner puts a question in your question paper that solve the system of linear equations in two variables, means he didn't have mentioned what type of method or particularly a method you have to use, but he told you that in question paper solve the system of linear equations by any of the method. You can use elimination method. It is very simple, and through this method we can save our precious time in examination. Now take the case of this substitution method. Substitution method is also a method through which we can find the solution of system of linear equations in two variables. I already told you that solution means we have to find the value of variable. Now, for example, if we have the system of linear equations, as I will write here, I will make an equation x plus y equal to 2 and 2x plus y equal to 4. Just like this is equation first, and name this as equation second. These are the system of linear equations. System means pair of linear equations. This is equation 1, this is 2 means pair. Two linear equations, but both are in two variables. This is first equation, this is second equation. Variable is x and y, variable is x and y, means these are the system of linear equations in two variables. We have to find the solution of the system of linear equations by substitution method. हमें क्या करना है, हमें substitution method यूज करना है ताकि हम कैलकुलेट कर सकें, ताकि हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हल करें. यानी कि हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना है किसका, जो इस दो इक्वेशंस में वेरिएबल हमारे हैं वो है x और y, इनका वैल्यू निकालना है, इनका हल निकालना है. दैट इज नोन एज टू फाइंड द सॉल्यूशन. उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन निकालना. यानी हमें x और y का वैल्यू निकालना है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेशन मेथड किया, तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करने जा रहे हैं. यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, नथिंग एल्स. सब्स्टिट्यूट का मतलब है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और कुछ नहीं. जस्ट लाइक सी हियर, दिस इज आवर लीनियर इक्वेशन नंबर 1 in two variables. This is our linear equation number 2 in two variables also. Now in substitution method, what is the first step we are going to do here? The first step is take any one of these equations, either it may be equation 1 or it may be equation 2. When we take any of these equations, what we have to do, we have to find the value of one variable in terms of other variable. We have to find the value of one variable in terms of other variable. What does that mean? Say here, I will write here from equation first. This is our equation first. I will write here x is equal to 2 minus y. X is equal to 2 minus y. Name this as equation 3rd. How x is equal to 2 minus y? These are basic things. You have already learned these things from your previous classes. From 5th onwards, you have already read what happens when we transfer any number from left hand side to right hand side. Whether it is plus, the sign of that very number changes from plus to minus, minus to plus, multiply to divide to multiply. If here it is plus, here it becomes minus, it becomes negative. If here it is multiply, here it becomes divide. If here it is divide, here it becomes multiply. These are the basic things in mathematics. You already learned these things in your previous classes. Now see here, what x is here, we calculated the value of x in terms of another variable. Here both variables are present. X is here variable, y is here variable, but we have calculated value of x in terms of another variable.
means x is equal to, here it is 2 and this plus y, transfer this on this right hand side of this equation. This is plus y, this became here minus y. Now see, now we use now substitution method. What does substitution method here means? What is the meaning of substitution method here? Substitute the value of this x. We have calculated the value of variable x in terms of variable y. We can also calculate the value of variable y in terms of variable x. Nothing is wrong here. It is up to we whether we calculate value of variable of x in terms of y or value of variable of y in terms of x. ये हम तक है, हम जैसे करेंगे ये हम तक है सब कुछ। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर x का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y। हम ये जरूरी नहीं है, हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो y है इसका भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो मैंने यहाँ पे निकाला x इक्वल टू 2 माइनस वाई। मैंने यहाँ पे x वेरिएबल का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y। नाउ आई विल राइट हियर सब्स्टिट्यूट the value of x equal to 2 minus y, x equal to 2 minus y from किस इक्वेशन से मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं? इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। मैंने यहां पे क्या कोशिश की? आई ट्राइड हियर टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल x in equation second, in equation second. Now see here, what is the value of x? Here the value of x is 2 minus y. I have to substitute this value in equation second. What is our equation second? Our equation second is 2 into x. 2 into x. What is our x? Our x is 2 minus y. Our x is 2 minus y. I will write here 2 minus y, then it is plus y, then it is equal to 4. Now see, multiply 2 by 2, 2 2s are 4, minus 2 into y is 2y, plus y is equal to 4. Now see here, therefore, these are like terms. We will mention here, or we will write here like terms on one side, and we will transfer another like terms on other hand side of this equation, just like this. This is minus 2y, this is plus y, remains minus y, is equal to, this is 4, this is plus 4. When we transfer it to this side, it becomes minus 4. Minus y is equal to 4 minus 4 is equal to 0. Therefore, y is also equal to 0. Y is also equal to 0 divided by this minus 1, that is also equal to 0. Y is equal to 0 means we calculate here the value of y, means we have find the solution of y, that is equal to 0. Now see, y equal to 0, यही हम करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हमने y का वैल्यू निकाला 0. We have find the value of y, that is equal to 0. Use this value or substitute y equal to 0 in this equation, equation third. I will write here, substitute the value of y equal to 0 in equation third. What is our equation third? X is equal to 2 minus y. X is equal to 2 minus y. Therefore, we will write x is equal to 2 minus y is equal to 0. Therefore, x is equal to 0 subtracted from 2. 0 means nothing. What we will subtract from 2? Nothing. Means x is equal to 2. Therefore, x is equal to 2, y is equal to 0 is the solution of system of linear equations in two variables. This is the solution, means last पे हमें यही पता चला कि what is solution. Solution तो यही था, हमें x और y का value निकालना था, nothing else. We have found the value of x that is equal to 2 and the value of y that is equal to 0. तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे value निकाला, किसका? x का निकाला और किसका निकाला? y का निकाला. तो x का वैल्यू हमें 2 निकला, y का वैल्यू हमें 0 निकला. तो it indicates that we have found the solution of system of this pair of linear equations in two variables.
तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो हमें कैसे इसमें हमें क्या करना है, बहुत सारी इक्वेशंस हमने लेनी है. जैसे कि मैंने ये दो इक्वेशन ले, ये we can say that these are the simplest linear equations in two variables. तो जब हम इन पे प्रैक्टिस करेंगे, पहले सिंपलेस्ट लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशंस भी लेंगे. तो आहिस्ता आहिस्ता जितना हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जितनी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम खुद बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि हम सब्जेक्ट देखेंगे मैथ, उसमें हमारे क्वेश्चंस हैं सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो क्या जरूरी है, हम खुद इक्वेशंस बना सकते हैं. मैथ ऐसा पोर्शन है, ये आपको खुद ही सिखाता है. जैसे हमने यहाँ पे ये सीखा कि कैसे हम हाउ विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आया कि पहले हमें एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, then we have to substitute that value in another equation, then here y equal to 0, हमें एक वेरिएबल का वैल्यू निकलता है. उसके बाद हम वो उसी तीसरी इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, वहां पे हमें x का वैल्यू निकला, तो फिर हमें सोल्यूशन मिला x इक्वल टू y इक्वल टू 0. मीन्स हमें मेथड समझ आया क्या करना है. सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सिंपलेस्ट लीनियर इक्वेशंस हमने ली, हमें समझ आया सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. ऐसे ही हम क्या करेंगे, बहुत सारी इक्वेशंस लेंगे, खुद बनाएंगे इक्वेशंस. जरूरी नहीं है मैथ पर हम देखेंगे, खुद इक्वेशंस बनाएंगे, खुद इक्वेशंस एग्जांपल लेंगे. जितनी लीनियर इक्वेशन हम इन्फिनिटी, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कितनी लीनियर इक्वेशन हम ले सकते हैं. जस्ट टेक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और टेक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. दो इक्वेशंस ली, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लीजिए, खुद बनाइए इक्वेशन, खुद देखिए. ऐसे ही चलो स्टेप वाइज, जैसे मैंने इसमें किया ऐसे ही चलो. या अगर आपको कोई और भी मेथड आपके पास है, कोई और भी अंदाजा आपके पास है, कोई और भी सोच आप रखते हैं इस बारे में, तो आप क्या करेंगे, एक तो आप सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और साथ साथ मुझे भी बताएंगे कि ये मेथड हम इसमें यूज करेंगे, ये चीज हम इसमें यूज करेंगे. ऐसे इसको हम more interesting बनाएंगे. तो I will assure you that this class, in next class, that class will become more interesting. Now see here, I have taken here these two system of linear equations in two variables. You will take any of these equations, just like I will write here x plus y equal to 9, 2x plus 3y equal to 4. ऐसे ही हम कितनी इक्वेशंस बना सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. उनको सॉल्व करने की कोशिश करो आप, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ. आप दो मेथड आपने सीखे, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, हाउ टू यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. डोंट वरी हियर, यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सारे मेथड्स हैं, सारे मेथड्स से हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालते हैं. पर्टिकुलर मेथड कोई नहीं है इसके लिए, बस ये मेथड्स हमें इसके लिए है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो सबसे आसान मेथड जो इसमें है, जिसमें हमें टाइम भी कम लगता है, वो है एलिमिनेशन मेथड. अगर एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा कि आप सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालो, मैंने पहले भी लेक्चर में भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, तो उस वक्त आप करना काम आप एलिमिनेशन मेथड यूज करना. इससे थोड़ा टाइम भी बच जाएगा आपको. तो उससे आप क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. लेकिन मेथड हर एक पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जामिनेशन में आपको कहा जाएगा सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. मींस it indicates that you have to use only substitution method, not elimination method. So method हर एक पता होना चाहिए, कैसे किस मेथड से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. मेथड आप यहाँ पे मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे है. मेरे ख्याल से अगर देखा जाएगा तो वेरी इजी मेथड है, ये भी बहुत इजी मेथड है. उतना टफ नहीं है कि हम ये बताएंगे समझ नहीं आएगा या हमें नहीं आएगा. वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे दो इक्वेशन से दिखाया कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे यूज करेंगे. तो मेरे ख्याल से जब आप भी देखेंगे इसमें, आप भी खुद कोशिश करेंगे और कुछ लीनियर इक्वेशंस लेंगे, तो यू विल ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दोज लीनियर इक्वेशंस. तो मेरे ख्याल से आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इंशाल्लाह, मुझे आई होप दैट दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड आप इसको इजीली गेट अप करोगे, तो आप इसको इजीली इस मेथड के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड करोगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को पढ़ेंगे कि क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, कैसे वो यूज कर सकते हैं हम टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो फिलहाल हमने ये दो टॉपिक यहाँ पे पढ़े हैं, एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो आप कीजिए काम, मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है कि आप कीजिए काम, आप ट्राई कीजिए जितनी भी आप जितना भी ले सकते हैं, जितनी भी लीनियर इक्वेशंस, आप ट्राई टू टेक वेरियस लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्राई टू सॉल्व दोस इक्वेशंस. क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करोगे
practice makes a man perfect. तो फिर आपको क्या हो जाएगा, उससे इजीली आपको गेटअप हो जाएगा, इजीली आपको ये समझ आएगा, इजीली आप इसको कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर एग्जाम में फिर पूछा जाएगा आप इजीली उसको कर सकते हो विदाउट टाइम कंज्यूमिंग, तो आराम के साथ आप वो सॉल्व कर सकोगे। तो इंशाल्लाह आई होप कि मैंने यहाँ पे जो आपको पढ़ा है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश की कि जो भी स्टूडेंट देख रहा है इसको या देखने की कोशिश करेगा, इसको इंशाल्लाह सभी देखने की कोशिश करेंगे तो वो गेटअप करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड को। अगर कहीं पे कोई भी गलती रही होगी या कोई भी इसमें आपको लग रहा है कि कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश करना है इसमें, तो आप ज़रूर वो शेयर करेंगे मेरे साथ। मैं ये वीडियो जो है फेसबुक पर लिंक भी भेज रहा हूँ, तो उस पर भी आप करेंगे काम, उस पर भी आप ये कोशिश करेंगे देखने की, जहाँ पे भी कुछ ऐड ऑन करना होगा ट्राई टू कमेंट दैट वेरी थिंग इन दैट लिंक, फेसबुक लिंक। तो उससे क्या हो जाएगा, मुझे भी अगर कहीं पर कोई यहाँ पे इसमें कुछ रह गया होगा मैं भी वो देखूंगा, तो उसमें हम वो ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। शुक्रिया।